Hello everyone. In the previous video, I have explained you what is sentence and there are how many parts of sentence, kinds of sentences and phrases. So today in this video, I am going to revise the chapter sentence so that you can understand it very well, because as we know that revision is the best way to learn. Okay students, so let us revise what is sentence. Sentence is a group of words that expresses a complete idea. Sentence वो होता है जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मीन्स बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और वो हमेशा कंप्लीट आइडिया या कंप्लीट मीनिंग को एक्सप्रेस करता है, बताता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, माई नेम इज़ सारा, मेरा नाम सारा है. आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है. यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो. इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स the sentence is expressing the complete meaning. So these are sentences. There are two parts of a sentence. It means that a sentence has two parts. एक sentence के दो parts होते हैं जो कि subject and predicate हैं. First one is subject, for whom we are talking about, जिसके बारे में हम बात करते हैं, चाहे वो कोई person हो, animal हो, कोई thing हो, जो भी हो जिसके बारे में हम sentence में बात करते हैं, that will be our subject. For example, we can see the manager has changed all of his staff recently. So in this sentence we are talking about the manager. So the manager will be the subject. And predicate is what is said about the subject. सब्जेक्ट के बारे में हम जो बातें करते हैं वो सारी बातें हमारी प्रेडिकेट होती हैं. When we will find the subject, जब हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा तो प्रेडिकेट फाइंड आउट करना वेरी इजी है. कैसे? क्योंकि सब्जेक्ट फाइंड करने के बाद जो भी हमारा है वो पूरा प्रेडिकेट है. वी कैन सी हियर व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या बताया गया है? हैज़ चेंज्ड ऑल ऑफ हिज स्टाफ रिसेंटली. So this will be the predicate. Here you can see exercises based on subject and predicate. The first one is write the subject of each sentences. It means you have to find out the subject and write in front of the sentences. Okay, so the first one is the children are happy. Now you will tell me and you will write in your copies that what will be the subject here, for whom we are talking about in this sentence. Second is Salim is absent today, for whom we are talking about. Third is the teacher punished Hamad. Fourth, the dog is hungry. And fifth, all the students are polite. So in these 5 sentences, you will find out the subject and then you will write the subjects before the sentences. Okay. Now the next one is underline the predicate of each sentences. In these sentences, you have to underline the predicates only. You will leave the subjects and underline the predicates. First is our book is interesting. As I told you earlier that what is predicate? Predicate is what is said about the subject.
So here you will underline what is said about the subject, and you will underline our book is interesting. Second, the car is broken. Third, dad bought for me a nice shirt. Fourth, grandma always tells stories. And fifth, Lara has a pink dress. You will do both these exercises in your homework copy and write clearly in a cursive writing. After the explanation of parts of sentences, now we will talk about the kinds of sentences. As we know that there are 4 kinds of sentences. The first one is statement sentences or declarative sentences. These sentences make statements. ये हमें कोई information देते हैं, किसी के बारे में कोई बात बताते हैं. For example, if I say that we are going to school, so this sentence is a statement sentence because this is giving us information. Okay, and statement sentences ends with a period or full stop. For example, we own a cat here. So statement sentences is clear. The second one is questions or interrogative sentences. In interrogative sentences, we ask questions, and in this type of sentence, it ends with a question mark. क्योंकि हम इसमें क्वेश्चन पूछते हैं तो इनके अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क को ही लगाया जाता है. वेयर इज़ द कैट? बिल्ली कहाँ है? यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सो दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस. थर्ड इज exclamatory sentences. Exclamatory sentences give some sudden feelings or emotions that we don't know before, जिसके बारे में हमको पहले से पता नहीं होता है. जब हम सरप्राइज़ हो जाते हैं, चाहे हम हैप्पीनेस से सरप्राइज़ हो जाएं या फिर ग्रीफ हो जाए, तो वो हमारे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं और उनमें हम एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं. और अगर इन सेंटेंसेस में कोई इंटरजेक्शन होता है तो हम उस इंटरजेक्शन के बाद एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ कर लेते हैं, और अगर इंटरजेक्शन नहीं होता है तो हम एंड में एक्सक्लामेशन मार्क का यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट इज इम्परेटिव सेंटेंसेस. इन इम्परेटिव सेंटेंसेस वी गिव कमांड्स, रिक्वेस्ट और एडवाइस. इसमें हम क्या करते हैं, किसी को कोई ऑर्डर करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, कोई एडवाइस देते हैं, कोई सलाह देते हैं, और इसमें हमेशा सब्जेक्ट नहीं होता है, छुपा हुआ होता है और डायरेक्टली ये वर्ब से स्टार्ट होते हैं. जैसे फीड द कैट है ना, यानी कैट को खिलाओ. तो यहाँ पर हम डायरेक्टली वर्ब से स्टार्ट करते हैं और कोई कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं. Here is an exercise based on types of sentences. You have to decide what type of the sentence is. First is don't drop those apples. Second, don't scare the birds away. Third, do you have your own computer? Fourth, please be careful. Fifth, what is the first letter of the alphabet? Sixth, do you like chocolate cake?
7th, my name is Francisca. 8th, today is a very sunny day. 9th, please come down to eat your breakfast. 10th, wow, that looks amazing. 11th, please open the door. 12th, what is your name? 13th, tomorrow we are going to the zoo. 14th, go to your class right now. 15th, can we watch a movie tonight? So here are the sentences, children, and you will find out which type of the sentence is, and you will write the name of that type. And do this in your homework copy and write properly.